So, hello everyone. Am I audible? Yes, Tejas. Okay, great. All right. Hello everyone. Welcome to our intro session. That is roadmap to be a full stack Android developer. I'm so glad that you all are here. We know that there is a lot going on right now, and we thankful to you that you took the time to learn more about this session, and आपने इसे useful समझा. उसके लिए भी thank you. And this could be an interactive session, so don't feel shy to ask questions in the chat box, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर है और आपको असिस्ट करना ही हमारा काम है. ठीक है. So now let me introduce myself first. My name is Tejas Patil. I am the lead of Android and Flutter domain at DSC AISSMS COE, and our team includes active members Aishwarya, Aman, Harsh, Omkar and Tejas. मैं और भी बता सकता हूँ डीएससी के बारे में, लेकिन सेशन में डाइव भी करना है हमें, और सभी डेवलपर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनके लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना एक एक्साइटिंग सा होगा, क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज देयर आर टोटल 2.5 बिलियन एक्टिव एंड्रॉयड यूजर. सो आपका जो नॉलेज होगा वो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है. ठीक है. और आपके पास एक मोटिवेशन भी रहेगा कि आपको इस 2.5 बिलियन की पहुंचना है. प्लस I want to get, before diving into the session, I want to get to know you better and what brought you here. So, if you are able to answer these three questions, that why are you here, what are your goals, and how do you plan to achieve, then trust me, the development is going to be very easy for you. Let me know in the chat box if you find the answer for this. Okay, so these are the some prerequisites for today's session. Assuming you are here in the right place, here are some prerequisites that will be helpful for this session. Having basic computer literacy and basic math skill is recommended. You will also need a computer and access to the internet to take some online course. आपके पास एक एंड्रॉयड फोन और एक डाटा केबल होनी चाहिए, ताकि आप जब अपना ऐप रन करें तो उस एंड्रॉयड फोन में रन कर सकते. इफ इन केस आपके पास एंड्रॉयड फोन ना भी हो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है. आपके कंप्यूटर पर ही इमुलेटर की मदद से आप अपना ऐप रन कर सकते हो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज द पेशेंस. जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो का ग्रेडल बिल्ड होगा तो उसको टाइम लगता है. ठीक है. तो अपने दिमाग को सिर्फ एक ही बात पता है उस टाइम कि रुको जरा, सबर करो. सो फन अपार्ट, लेट्स मूव अहेड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट the goal for is you. You have to build your first Android app. To do this, you will install Android Studio on your computer, which is an software to build Android apps. इसका एक अल्टरनेटिव भी मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज थंकेबल. ठीक है. थंकेबल क्या है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऐप बना सकते हैं एंड्रॉयड के लिए भी और आईओएस के लिए भी. तो वो पूरा पजल टाइप में है. कंप्यूटर चाहिए वो पजल के फॉर्म में होते हैं, वो आपको सिर्फ उठा के अपने पजल सॉल्व करना है, तो आपका वो कोड ऑटोमेटिकली बैकएंड में कर देगा. तो वैसे भी आपके ऐप तैयार हो सकते हैं, लेकिन वो सब चिंटू का काम है. यू नो चिंटू मूवीज. तो हम चिंटू नहीं है, हम ऑफिशियल वे से प्रोसेस करेंगे ऐप बनाने के लिए. ठीक है. तो इन द एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट रिसोर्सेज ऑन हाउ यू कैन कंटिन्यू लर्निंग एंड बिल्डिंग एप्स बियॉन्ड दिस इवेंट. अभी सेशन ज्वाइन किए हुए सब लोगों को एक स्पॉइलर, सरप्राइज स्पॉइलर, कि यूडेमी का एक प्रीमियम कोर्स है जो आपको एक प्रीमियम रिसोर्स मतलब सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो हम आपको यहाँ पर फ्री मिल दे रहे हैं. ठीक है. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी फुल्ली इंफॉर्मेटिव प्लस रिवॉर्डिंग and also useful for you in your career. So don't miss this session. Hang on with us till the end. And that's for my all part for introduction. And now there is a first part of quiz for you guys, so you will not get bored, and this session will be look like more interactive. Okay. So my colleague Harsh will handle from here now. Thank you. Thank you, Tejas, for explaining us. We definitely enjoyed it. Now let's jump into the fun part. First, I would like you to go through the guidelines of the quiz. This quiz is divided into two parts, 4 plus 6. 4 questions will be answered now and 6 at the end of the session. So please, please, please do not close the Kahoot tab till the end. All the questions are very, very simple and are discussed in the session. So be alert throughout the session. You can keep any name in the quiz, but for claiming a prize,
you need to provide the screenshot from your side. We recommend use that you use two devices or two tabs for faster answering. That might increase your chance to win the prizes. So now I'd like to share the prizes for today's quiz. The link is given in the chat. The quiz prizes are: first person will get Google branded t-shirt, a certificate and a shout out from our official DSC handle on Instagram. The second person will get a certificate and a shout out, and the third person will get a certificate and shout out too. So now I'd like to share the code for the quiz. So is the code for the quiz visible? Yes, yes, it's visible. I request everyone to join the quiz. This quiz is very, very simple. The first four questions, you might already know it. We'll wait for a few minutes more and then we'll start. If you are attending this session and not joining the quiz, you are really missing on some cool stuff. So I'll repeat again. I request every one of you to join the quiz. The code is displayed in the screen and the link is given in the chat.
So I guess 49 count is stable. So should we start the quiz? So I think now we should start the quiz. Is there anyone left? You can use the chat box. Okay, so I'll start the quiz now. Here comes the first question. Android application extension is. I hope every one of you knows the answer. So time's up. Let's proceed with the next. Okay, we have Arctic Raccoon at rank 1. Question number 2. Android project was first developed by. Okay, so here we have 38 correct answers. Let's see. Arctic Raccoon still at the rank 1. Which of the following IDE is officially recommended for Android development? Okay, the last question for now. Which OS supports Android Studio? Okay, so with this, we have the leaderboard
Imposter is at the rank 1, so we can say there's some imposter among us. Just kidding. Yash is at rank 2, and Cloak 18 is at rank 3. There's not much of a difference. So thanks a lot for answering the questions. Do not close the tab. The last 6 questions will be based on the session. So be alert throughout the session. I request Aman to carry on. And again, please do not close the tab or else your score will reset. Thank you. Hi guys, good evening. Hope you all enjoyed the first part of the quiz. This is Aman Khan, your core member of Android and Flutter domain from DSC AISSMS COE. Today, my major focus will be to give you all a pathway, a roadmap towards becoming the best-in-class Android developer, starting right from the basics. So let's start. I won't take much of the time, but I ensure you that I'll make all the points clear today. Language is not the barrier. I'll explain you in English as well as Hindi, so that what I want to explain must be clear to each and every one attending the seminar. So, as my lead Tejas has already stated some of the basics about Android, so I would like to start from where he left. The first and the foremost question which comes up is what actually Android is. So, Android is an operating system, and now what is an operating system? An operating system is a software which helps us to use the hardware. Now we cannot directly interact with the hardware as it only takes zeros and ones. So operating systems helps us to understand these zeros and ones. हम हार्डवेयर से हम डायरेक्टली मतलब ऐसा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझता है. तो अब हमको जीरो एंड वंस की भाषा समझ में इतनी आसानी से आती नहीं है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमको वो भाषा को आसान करके देता है. और एंड्रॉइड भी यही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है. So Android is a modified version of Linux operating systems, which helps us to interact with our smartphones. What actually Android is officially released by Google. It's open source, so you can contribute towards the development of Android with your knowledge, and that knowledge we are going to gain it today. Okay, so please stay tuned. Moving towards the first point, as I stated that Android is open source, so you can contribute towards development. And how you can contribute? So whenever Google releases a version, अब वर्जन से मेरा क्या मतलब है कि मुझे भी पता है एंड्रॉइड वर्जन्स क्या होते हैं कि जैसे एंड्रॉइड 5 हो गया, एंड्रॉइड 6 हो गया, कोई उसे एंड्रॉइड लॉलीपॉप, एंड्रॉइड किटकैट, एंड्रॉइड ओरियो, अलग अलग वर्जन्स होते हैं. तो जैसे ही ये वर्जन गूगल रिलीज करता है, उनके साथ एक एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट रिलीज करता है. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या है? ये गूगल की तरफ से हमको एक टूल किट प्रोवाइड किया गया है. ये टूल किट की मदद से हम उस वर्जन के लिए इस टूलकिट की मदद से हम उस वर्जन के लिए हमारे एप्स बना सकते हैं. ठीक है ना? तो इसको हम कॉमनली एसडीके भी बोलते हैं, बट उसका एक्चुअल रीजन ये है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एक्चुअली एंड्रॉइड डेवलपमेंट मींस. तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि एंड्रॉइड डेवलपर में दो पॉसिबिलिटीज है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर बन जाए. ठीक है? या तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप एंड्रॉइड के लिए फर्मवेयर डेवलप करें, जिसको कस्टम रॉम्स भी कहा जाता है. सो आई वुड बी ब्रीफिंग यू अबाउट कस्टम रॉम्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेमिनार, सो प्लीज बी ट्यून्ड इन. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपिंग एंड्रॉइड एप्स पार्ट. The first and the foremost tool which you all will require for Android development is a programming language. So there are lots of options for Android development languages, and here's the most of the new enthusiast gets confused. मतलब यहाँ आकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. गूगल पे सर्च करते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है, लैंग्वेज कौन सी उठाया जाए. सो गूगल बताता है आप फ्लटर चूज कर सकते हो, आप जावा चूज कर सकते हो, आप कॉटलिन चूज कर सकते हो. तो मैं आपको आज ये क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहिए. अब ऐप डेवलपमेंट में बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक नेटिव ऐप डेवलपमेंट हो गया और एक हाइब्रिड ऐप. तो नेटिव ऐप डेवलपमेंट है कि जब आप एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाओ, जैसे अगर एंड्रॉइड के लिए बनाया है तो सिर्फ एंड्रॉइड पे चलेगा वो ऐप, और अगर आईओएस के लिए बनाया है तो सिर्फ आईओएस के लिए. बट हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट वैसा नहीं होता. हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट में आपके ऐप्स क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं, वो एंड्रॉइड पे भी चलेगा और वो आईओएस पे भी चलेगा. तो अब हमको डिसाइड करना है हम कौन से टाइप का ऐप डेवलपमेंट करने वाले हैं, और उस बेसिस पे लैंग्वेज सिलेक्शन होगा. अगर हम नेटिव ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो कौन से लैंग्वेजेस अवेलेबल है? तो उसके लिए जावा है, कॉटलिन है. अगर हम
हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, तो उसके लिए फ्लटर है, xamarin है। तो अब इन सारे लैंग्वेजेस में से हम कौन सी चुने, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जावा चुनिए। क्यों? क्योंकि जावा जो है ये कोर लैंग्वेज है, इट्स अ well developed language. The tools related to app development in Java are easily available. The resources to learn Java are plentiful. आप सिर्फ एक गूगल सर्च कर लो, आसानी से पूरे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जावा सीखने के लिए। तो जावा सीखना विल नॉट बी एन ऑब्स्ट्रक्शन। प्लस इट्स, ये जो लैंग्वेज है ये मार्केट में बहुत सालों से है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत मेच्योर हो चुकी है, बहुत मतलब बहुत डेवलप हो चुकी है लैंग्वेज। तो इसलिए आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी सीखने के लिए। बट ये सिर्फ एक रीजन नहीं हुआ, इसके अलावा ये रीजन हो सकता है कि व्हेन यू सिलेक्ट जावा यू कीप योरसेल्फ फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी इन विच यू आर वर्किंग। व्हाट आई मीन टू से इज दैट जावा with Java Spring Boot can be used for web app development, and if you learn data structure and algorithm then it will be useful for your interview preparations. You can also use Java for GUI and applets. तो सिर्फ एक प्लस पॉइंट नहीं है जावा का मन से। और एक एडवांटेज ये भी है कि जो एप्स जावा में बने होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो जावा सिलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रीजंस हो गए। बट ये नहीं कि मैं सिर्फ जावा पे फोकस करूंगा, मैं आपको दूसरे भी लैंग्वेजेस का बता देता हूँ। कॉटलिन नेक्स्ट जो लैंग्वेज होगी वो कॉटलिन है। अब कॉटलिन क्या है? ये ऑफिशियल एंड्रॉइड की लैंग्वेज है, ये जिस गूगल ने डिक्लेयर किया है 2017 में। इसके पहले जावा ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट अब गूगल ने उसको शिफ्ट करके कॉटलिन पे लेके आया। कॉटलिन यूज करने का एज सच डिसएडवांटेज सिर्फ इतना होगा कि इसमें न्यू है लैंग्वेज, तो इसके रिसोर्सेज कम होंगे, स्केर्स होंगे, आपको रॉ डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू जाना पड़ेगा जो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। प्लस आपको हल्का सा कोडिंग नॉलेज होना जरूरी है कॉटलिन सीखने के लिए। But but being a Kotlin developer gives you an advantage over Java developer in the sense that the number of Kotlin developers is less. So whenever a company shifts its base from Java to Kotlin, then you will actually be in demand. So take care, guys. Next language which I am shifting is Flutter. अब यहाँ पर Flutter एक important चीज है। Flutter is actually a software development kit. ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक डेवलपमेंट किट है, और इसमें आपको डार्ट लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है कोडिंग के लिए। फ्लटर कि कोई एडवांटेजेस नहीं है, सिर्फ एक ये कि उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। तो व्हेन यू नीड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू बी लो यू हैव टू यूज जावा और सम अदर नेटिव ऐप डेवलपमेंट लैंग्वेज। बट अगर ऐसा देखा जाए तो फ्लटर भी काफी ज्यादा पावरफुल है इस मैनर में कि वो आपको एंड्रॉइड भी डेवलप कर सक दे सकता है, iOS भी, एज वेल एज वेब एप्स, तो और कुछ ऐसे भी एप्स जो जावा में इजीली एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको जावा सिलेक्ट करना सजेस्ट करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली जावा इज अ गुड लैंग्वेज, वेल मैच्योर्ड, वेल डेवलप्ड लैंग्वेज। अगर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है तो कॉटलिन सिलेक्ट कीजिए, और अगर हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट करना है तो फ्लटर। अब तरफ बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि एक्सएमएल क्या है, और मैं अगर एक्सएमएल सीख जाऊं तो जावा सीखने की जरूरत नहीं होगी क्या? नहीं गाइज, ऐसा नहीं है। XML और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर डिजाइन एंड लेआउट। So the view, the look and the feel of the app is written in XML. For example, you have an app with a button and a text view. तो वो जो बटन दिख रहा है आपको, वो जो टेक्स्ट व्यू दिख रहा है वो XML में लिखा गया है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या, वो बटन दबाएंगे तो होगा क्या, वो जो है वो जावा में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये कि आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए कि एक्सएमएल में डिजाइनिंग कैसे किया जाए और जावा का लॉजिक कैसा लिखा जाए। पर इसमें एक बात ये भी है कि एक्सएमएल आना जरूरी नहीं है, बिकॉज अगला जो पॉइंट है एंड्रॉइड स्टूडियो, उसमें आपको आसानी से एक डिजाइन व्यू मिल जाता है जहां पर आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इनिशियली एक्सएमएल कोड नहीं आता हो तो कोई इशू नहीं है गाइज, you all can start Android development right from now without having prior knowledge of XML. Only you need is Java and Android Studio. So the next important tool which you'll require is a good development environment. And for this, my lead will brief you about Android Studio, how to install it, and what are the various parts useful for the development. Over to you, Tejas. Okay, that's it. Thank you, Aman. In a moment, I will let you get started on the course. Work at your own pace. If you get stuck, you can ask me or any other of my team member. Let's see installation of Android Studio step by step. So first step,
open your web browser and search for Android Studio. Then there is a site of official developer android.com. तो आपको वहाँ पे पेज दिखेगा, वो आपको ओपन करना है। फिर डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे नीचे आपको दिखा होगा कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है और उसकी साइज कितनी है। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम का कंपेटिबल वर्जन चेक करना चाहते हो, कंपेटिबल है या नहीं, तो आप उसी पेज के नीचे सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, अब डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको उस एंड्रॉइड स्टूडियो के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपका इंस्टॉलर डाउनलोड होगा। वो आपके नेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितनी जल्दी डाउनलोड होगा। वंस इंस्टॉलर अपडेट मतलब ओपन करोगे आप, तो एक सिंपल प्रोसेस है, जस्ट लाइक यू इंस्टॉल द गेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क वेदर यू वांट टू इंस्टॉल एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस और नॉट। तो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस जो मैंने बताया था कि आपके पीसी में एक इमुलेटर ओपन होगा जहाँ पर आप ऐप अपने रन कर सकते हो। तो इट विल टू मिनिमम 2.5 GB ऑफ स्पेस। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वो आपको डायरेक्टरी पूछेगा कि कौन सी डायरेक्टरी में आपको इंस्टॉल करना है। तो ये डायरेक्टरी आपकी हार्ड डिस्क की डायरेक्टरी, मतलब आपको एंड्रॉइड स्टूडियो एक्चुअली में कहाँ पर इंस्टॉल करना है। सॉरी गाइस, ओके हाँ। तो एक बार आपने एंड्रॉइड स्टूडियो अपने पीसी में इंस्टॉल कर दिया, तो हाँ, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का आपको एक पॉपअप आएगा, फिर आपको ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो इसके लिए वो आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड जो है एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। So you are opening it for first time, so it will download some required tools which will be useful for development. Okay, so it's one time process. It's only depend on tools you have to be downloaded. If you select custom setting, मतलब वो आपको पूछेगा कि आपको कस्टम सेटिंग चाहिए या फिर स्टैंडर्ड सेटिंग्स चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करोगे तो उसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड यूजर्स प्रेजेंट है उन्हें जो सेटिंग्स लगती है तो वो आपको इंस्टॉल करके देगा। तो अभी हम वही सिलेक्ट करें। तो उसके बाद वो पूछता है कि आपको कौन सा यूआई चाहिए। यूआई बेसिकली कंप्लीटली अप टू यू कि आपको कौन सा यूआई सिलेक्ट करना है, वेदर यू कैन सिलेक्ट ड्रैकुला और लाइट थीम। तो उसके बाद जो टूल्स है रिक्वायर्ड वो ऑटोमेटिकली उसकी लिस्ट और साइज आपको शो करेंगे। आपको एक नेट कनेक्शन चाहिए और फिनिश करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो आपका सेटअप कर देगा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन में इतना ही है। नाउ एंड्रॉइड स्टूडियो का ओवरव्यू। एंड्रॉइड स्टूडियो के ओवरव्यू में जाने के पहले मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा कि मतलब ऐसे जनरल नॉलेज में कि एंड्रॉइड डेवलप्ड बाय एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेटेड बेसिकली फॉर कैमरा यूज, बट लेटर इट इज चैंपियन बाय गूगल एंड ओन बाय ओपन हैंडसेट अलायंस एंड यूजर एज मोबाइल ओएस। तो ये आपको कभी मतलब पूछ सकते हैं एज ए इंटरव्यू में। तो नाउ लेट्स डू अ क्विक एंड फास्ट एंड्रॉइड स्टूडियो ओवरव्यू, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले उसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का मेन विंडो है। तो लेफ्ट साइड में इफ यू प्रीवियसली ओपन सम प्रोजेक्ट देन इट विल शो हियर, and at the right side here are some useful and basic needed things. If you want to create a new project, then click on start new project, create new project. If you already have any project on your PC, then you can open it from here. And third option is git version control. So if you have your project on GitHub, you can pull it here. अगर आपने DSC का पिछला गिट एंड गिटहब वाला सेशन अटेंड किया होगा तो आपको इसके बारे में एक आइडिया होगी कि क्या होता है। स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एंड हियर गेट हेल्प में अगर आप क्लिक करोगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो हेल्प, तो वो आपको ऑफिशियल वेब पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में मोर मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट।
Okay, now you have to select one of these templates. Okay, it is basically predefined course to use. तो इधर बहुत सारे टेम्पलेट्स है, जैसे कि बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी है और एम्प्टी एक्टिविटी है, नीचे मैप्स एक्टिविटी है. तो इट बेसिकली अप टू यू कि विच एक्टिविटी you want to select. Now we are going to select empty activity because we are beginner level at. Now it will ask for entering project name and you can add whatever you want. So where I'm adding roadmap. Okay, और pirated एज पर योर ऐप नेम. जब आप अपना ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करने जाओगे तो ये पैकेज नेम है ना, तो ये एज यूआरएल की तरह वहाँ पे काम आता है. सो सेव लोकेशन मतलब क्या, अपने डायरेक्टरी में मतलब डिस्क में, हार्ड डिस्क में एक्चुअली ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हो रहा है उसका लोकेशन ये है सेव लोकेशन पर. तो आप ये चेंज कर सकते हो. और इसके बीच में कोई भी व्हाइट प्लेस मतलब व्हाइट और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है. अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ब्लैंक स्पेस डाल दिया तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा, प्रोजेक्ट लोकेशन शुड नॉट कंटेन व्हाइट स्पेसेस. ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. देन यू हैव टू सिलेक्ट बैकएंड लैंग्वेज जावा और कोटलिन. एज अमन सेड, हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट जावा में भी कर सकते हैं और कोटलिन में भी कर सकते हैं. तो अभी मैं जावा में सिलेक्ट रहने देता हूँ. फिर उसके बाद last part is for selecting minimum SDK. By default it is selected for Lollipop version 5.0. It means your app will not be run for previous version of 5.0, that is KitKat. मतलब आपने अगर 5.0 by default select रखा है तो आपका जो एंड्रॉइड ऐप बना वो पिछले वाले वर्जन पे नहीं चलेगा. तो इतना ही, ये फिनिश कर देंगे तो अपना एक्चुअल एंड्रॉइड स्टूडियो का विंडो ओपन हो जाएगा. करंटली क्या हो रहा है कि बिल्ड हो रहा है. तो यही वो प्रोसेस था जहाँ पर मैंने बताया था कि रुको जरा सब्र करो, इस पे टाइम लगता है. ठीक है, तो ग्रेडल बिल्ड मीन व्हाट, द कोड यू हैव रिटन विल बी कंपाइल एंड चेक वेदर इट हैव एनी एरर और नॉट. इफ नॉट इट विल क्रिएट एन एपीके फाइल. तो आप तो कहेंगे कि अभी तक हमने स्टार्ट किया है, कोड तो लिखा है नहीं, तो ये कंपाइल फाइल कैसे बनाएगा. तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि वो टेम्पलेट सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके यहाँ पे दे रहा है. ठीक है, तो ये दो पेज है, एक एक्सएमएल पेज और एक जावा पेज. एक्सएमएल पेज अपना जीयूआई का है और जावा का पेज अपना बैकएंड का है. तो बिल्ड हो चुका है. तो बिल्ड होने के बाद यहाँ पे रन ऐप बोल रहा है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने फोन में ऐप इंस्टॉल कर सकते हो. तो सबसे पहले जो कोड लिखा हुआ आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उस पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है. फॉर योर विजिबिलिटी मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ. ठीक है, टेक्स्ट साइज, आई होप यू कैन सी इट नाउ. तो यहाँ पे आपको फिजिकल डिवाइस कौन सा है, मैंने अभी नोट 7 प्रो कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये आ चुका है. और यहाँ पे रन करने के बाद आपका ऐप रन होगा. तो तब तक हम ये ऊपर वाला टूल बार देखते थे कि बेसिकली सभी सॉफ्टवेयर की तरह ये भी सेम है. फाइल में आपको न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. ओपन का मतलब जो प्रीवियस आपके पास पहले से प्रोजेक्ट होगा तो ये ओपन करने का ऑप्शन है. ओपन रिसेंट में क्या आता कि अगर आपके पास प्रीवियसली पहले से आपने कुछ प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में क्रिएट किए हैं और वो ओपन किए थे पहले बार, तो वो रिसेंट में दिखाएगा आपको. क्लोज प्रोजेक्ट मतलब अभी जो करंटली प्रोजेक्ट चल रहा है उसको क्लोज करने का. ठीक है, सेव ऑल और एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और एग्जिट. और एडिट का जो अंडू वगैरह पार्ट है वो आपको आता है. हम पावर पॉइंट में भी यूज करते हैं, वर्ड में भी यूज करते हैं. और यूजफुल क्या है इसमें, ये रन वाला पार्ट, और रन नहीं, और रन वो यहाँ पे रन करते हैं. टूल्स वाला पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके एसडी के टूल जो डाउनलोड करता है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं. प्लस फायरबेस को भी कनेक्ट यहाँ से कर सकते हैं आप. हेल्प पार्ट में आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्जन दिखता है इधर की कितना है, लेटेस्ट वाला हो तो अच्छा है. So here at the left side you can see your project directory. First here is a manifest file and this is an index for your project. आपके प्रोजेक्ट में कितने पेजेस है, मतलब थीम कौन सी अप्लाइड है, और ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा. मतलब आपका लोगो कौन सा है ऐप का वो भी यहाँ पे दिखाई दिया होगा. तो ये सारी चीजें एज ए इंडेक्स की तरह यहाँ पे काम आती है. और अगर आपके ऐप में कोई एक्सटर्नल
परमिशंस आपको देने हैं, मतलब इंटरनेट परमिशन चाहिए या फिर कोई और परमिशन चाहिए, तो ये भी आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में ही डालना पड़ेगा। तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट इज ए इंडेक्सिंग फाइल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद और एक यहाँ पे जावा की फाइल रहती है इधर टूल्स में, ठीक है। जावा के में जितने भी जावा के रिलेटेड फाइल्स है वो सब इस जावा के अंडर रहेगी। और रिसोर्सेज में भी 4 ऑप्शन है। ड्रॉएबल में सारे ग्राफिक्स कंटेंट के रिलेटेड होते हैं, मतलब अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में कौन से इमेज डालने हैं, बैकग्राउंड इमेजेस डालने हैं, नहीं तो आपने कस्टमाइज किए होंगे बटन होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ड्रॉएबल में डालनी होगी, नहीं तो वो किसी और डायरेक्टरी से एक्सेस नहीं होगी। तो लेआउट में क्या रहता है, बेसिकली आपका जो जीयूआई का पार्ट है एक्सएमएल पेजेस, वो सारे एक्टिव लेआउट फोल्डर में रहेंगे। मिप मैप में आपके लोगोज रहेंगे और वैल्यूज के अंडर कलर्स और स्ट्रिंग से एक्सएमएल फाइल रहेंगे। तो बेसिकली ये क्या रहता, अगर जो पूरे ऐप में जो भी कलर कोड रहेंगे आपके, जो रिपीटेडली यूज कर रहे हो आप, तो वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, सेम एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट आपके ऐप का नाम लिखा हुआ आ रहा है, रोड मैप। अगर मैं यहाँ से नाम चेंज करूँ अपने ऐप का, तो इंस्टॉल होने के बाद वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, मतलब आपको फोन में दिखाते वक्त भी चेंज हो जाएगा। तो अब हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। होप यू कैन सी माय स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, ओके। एंड यहाँ से रन करें, तो रन करते वक्त ये फिर से एक बार ग्रेडल बिल्ड करेगा और फिर रन करेगा, ठीक है। और तब तक हम क्या देख लेते हैं। तब तक अभी क्या हमारा कोड कितना तैयार है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मतलब कोड तैयार है अभी तक। हेलो वर्ल्ड किस में प्रिंट हो रहा, एक कंपोनेंट है जिसका नाम है टेक्स्ट व्यू। अभी आपको ये सारे कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे, एज हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इजी होगा कि ये सारे कैसे सीखे, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू। अगर आपको एक पर्टिकुलर इमेज शो करनी है, तो उसके लिए इमेज व्यू कंपोनेंट है। आपको बटन ऐड करने हैं अपने अपने तो उसके लिए बटन कंपोनेंट है। तो वैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स है, आप जैसे जैसे रिसोर्सेज एक्सेस करोगे, वैसे वैसे आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि स्टार्ट विद द डिजाइनिंग ओनली, मतलब आप स्टार्टिंग में लॉगिन पेज बनाओ, मतलब फॉर्म्स बनाओ, तो एक इंटरेस्ट जनरेट होगा आप में, और उसके बाद आप बैकएंड की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको सक्सेस ऑपरेशन सक्सीड। तो आप देख सकते हैं अपने फोन में कि ऐप अपना रन हो चुका है। देखो यहाँ पे रोड मैप नाम का, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोग्राम, मतलब अपना टेक्स्ट व्यू दिख रहा है आपको। अगर ठीक है, अब एंड्रॉइड स्टूडियो की एक और खासियत बात कि गूगल ने इसको इतना यूजर फ्रेंडली बनाया है कि आपको एक्सएमएल कोड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में मिल जाती है, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन से आपको डिजाइन स्ट्रीम में जाना है, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट है। यहाँ से आप बटन चाहिए, आप बटन डायरेक्टली उठा सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप खुद इसको पोजीशन कर सकते हो। मतलब आप देखिए कि ये कितना सिंपल है एंड्रॉइड। यहाँ पर से आप इसको अलाइन कर दोगे कि ये बटन मुझे इस हेलो वर्ल्ड के नीचे चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रन करते, तो इस बार अपना कोड क्या है एंड्रॉयड का, तो हेलो वर्ल्ड और उसके नीचे एक बटन दिखना चाहिए। तो देखते अभी ये होता है नहीं, टर्मिनेट, फिर ये इंस्टॉल करेगा। ये प्रीवियसली, हाँ देखिए, हेलो वर्ल्ड और फिर आपका बटन। तो सेम मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले, तो उसके बाद बैकएंड करना मतलब इजी हो जाएगा। So that's it from my side for about Android Studio overview. Now my colleague Aman will handle from here. Thank you. So welcome back, guys. Now I would like to list down certain hardware requirements which you require for Android development. The basic and am I audible? Yes, Aman. Okay. So the basic requirement which you'll require is a 4 GB RAM, at least 64-bit processor. Hell minimum requirement. Beyond below this, the Android Studio won't run, I think so. So 4 GB RAM at least required.
Now the other specifications which I'll spell out are just for the purpose of enhancing the experience. First is SSD. What SSD will do is it will give you an extra boost for the performance. An extra RAM which will give you better and smoother programming experience. 8 GB or 16 GB is recommended but not compulsory. As you can see, Tejas had 16 GB RAM, so the experience was smooth. And last but not the least, and use of Android phones instead of AVD. Now, what actually AVD do is this. You all can see it eats up the RAM. So whenever you all start Android development, please make sure that you all use your Android phones for checking your apps, because if you all start using Android virtual device, then it will eat up your RAM and you won't be able to use any other things except that AVD manager. So moving ahead, coming to the important part, resources. So why I'm saying important is because before we start the bootcamp or the event, y'all can start learning. So this is the most important part of the seminar, the resources which would help you all become an expert. All the resources mentioned here are free of cost and easily available. Also, the link will be provided to you all. The resources mentioned here are arranged in the order that going from basics towards the advanced. So please note them down if you can. The first is all these resources are available on Udacity. So you can see there's also these are also the resources which you can see on your slide. These are the resources to learn Java, and some resources are for learning Android development. But the resources which I'm going to spell out are explicitly for Android development. The first is Android Basics User Interface. This will give you a basic information about what Android is, what Android Studio is, how to use them, what's a text input button, and so on. The second course is Android Basics User Input. What this course will teach you is how to take input from user, how to process those things. The third course is Android Basics Multi-Screen App. All these courses are available on Udacity. You can check it out. They are free of cost and worth checking. So please do check once. A multi-screen app course will teach you how to generate, how to build multi-screen apps. You all must have knowledge of what are multi-screen apps, like chat apps and other sort of apps which have multi-screens. You click one button and you shift to some other screen. So this course will teach you that how to generate those multi-screen apps, how to move from one app to another. The second course is Android Basics Networking. Now, what this course will teach you is when you are clear with the basics and you all have internet connection in your application. So how you can connect, what else you can do with the help of internet connection, that will be taught in Android Basics course. And the next is Android Basics Data Storage. Here is the important point: the database. Database is an important point in Android application. Like whenever you develop an application, you need to have a backend for that. So that backend or that database, which database, SQLite is the default database for Android. Then SQLite helper classes are there for interacting with the SQLite, right? Reader and searches. So all those things are there in this course. The next course, and it's written over here, developing Android app. It's given in the PPT. So it's given in the PPT. You all please check it once. This app is having the contents same as the contents which were in Google India Channel Scholarship. Uh, the scholarship thing, and they develop a Sunshine Weather app. The facilitators and the tutors are also the same. It's a long course. It will take time, but it's worth investing. The next is Advanced Android App Development by Google. Not recommended. If you want to go, you can please check it. Firebase UI testing and all. The next course which I'm going to spell is important: Firebase in a weekend. So what this course will do is it's a small course and it will teach you how to make chat applications. The cryptographic encryptions, decryptions, RSA, AES, DS will be taught. So it's a good app. It will teach you how to use Firebase and all. Now, as you all know that at some point or the other you have to graduate from the college you're studying. Similarly, graduating Android means that you should know how to read the official documentations. So at first, if you start reading it, it may seem too raw, but when you complete the resources given and then you have an intermediary knowledge and you check the documentations, you'll get what they try to say. Also, when you when you face certain problems when developing Android applications, you can solve them with the help of official Android documentations. Moving ahead, guys.
अगर आप ये बोले कि मैं पहले 2 महीने से पूरा थियरी पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में 1 महीना मैं कर लूँगा, तो ऐसा करके 3 महीने में मैं एक्सपर्ट बन जाऊँगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको थोड़े से प्रोजेक्ट्स साइड बाय साइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस स्ट्रीम में हैं, मतलब ये कंप्यूटर की स्ट्रीम है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, एंड्रॉइड हो या वेब ऐप हो, कुछ भी हो, हर 2-3 महीने में यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ पूरी की पूरी रिवैम्प हो जाती है। तो कभी-कभी ऐसा होगा कि आपने अभी पढ़ने लग गए, 2 महीने में आपने पढ़ भी लिया और वो टेक्नोलॉजी रिवैम्प हो गई, तो आपका क्या फ़ायदा पढ़ कर? वापस पढ़ना पड़ेगा। तो एक इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी वो रिसोर्सेज़ पढ़ने लग जाए, तो आप प्रोजेक्ट्स करने लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ जॉट डाउन किया हो कि प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ सुन लीजिए, तो ताकि जैसे आप रिसोर्सेज़ पढ़ते रहेंगे, तो वैसे-वैसे आप उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या करेगा, आपको डिज़ाइनिंग से फ़ैमिलियर कर लेगा। होप आई एम नॉट बोरिंग यू ऑल, ओके? अ, हर्ष, ठीक है ना? Yes, bro. Please ओके। continue. ओके। तो कैलकुलेटर क्या करेगा, आपको डिज़ाइन से फ़ैमिलियर कर लेगा। जो सेकंड है टिक टैक टो गेम, ये आपको डिज़ाइन में कुछ नहीं है, इसमें आपको लॉजिक लगाना होगा, बैकएंड कोडिंग, तो वो उससे फ़ैमिलियर कर लेगा। जो थर्ड है टू डू लिस्ट, इसमें आपको जब आप बेसिक से क्लियर हो जाएँगे कि डिज़ाइन क्या है, लॉजिक क्या है, तो आपको टू डू लिस्ट में बताएगा कि रिसाइक्लर व्यू क्या होते क्या होते हैं, उसके एडेप्टर क्लासेस क्या होते हैं, मॉडल क्लासेस क्या होते हैं, लोकल डाटाबेसेस क्या होते हैं। तो ये आप उस रिसोर्सेज़ से सीखेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इट्स दैट सिंपल। बस इतना है कि आपको साथ साथ में करना है, सीखते रहना है, प्रोग्रामिंग करते रहना है। फोर्थ इज़ रिमाइंडर ऐप। इसमें कॉन्सेप्ट सारे सेम है ऊपर के जैसे, बस आपको टाइम क्लॉक वाला यूज़ करना पड़ेगा पार्ट। फिफ्थ इज़ क्विज़ ऐप। अब यहाँ पर काम आएगा आपको फायरबेस, क्योंकि लोकल डाटाबेस आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसपे डाटा थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, रीड एंड राइट स्लो होगा। तो और प्लस प्लस गूगल की तरफ से हमको 1 जीबी का स्टोरेज होता है अपना डाटा यूज़ करने के लिए। तो फायरबेस सीखिए, फायरबेस यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए क्विज़ ऐप में। नेक्स्ट जो है म्यूज़िक ऐप, ये सर्विसेज़, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, नोटिफ़िकेशंस, मीडिया प्लेयर, मीडिया रिकॉर्डर, ये क्लासेस आपको सिखाएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए म्यूज़िक ऐप के ज़रिए। और भी बहुत कुछ है। जैसे-जैसे आप ऊपर के एप्लीकेशंस करेंगे, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएँगे। 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ 3-4 घंटे में हो जाएँगे। नीचे के ऐप्स को आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा। तो जैसे मेरे लीड ने कहा कि रुको ज़रा थोड़ा सब्र, बस सब्र करते रहना है। और लास्ट ऐप मैंने रखा हूँ ई-कॉमर्स ऐप। इसमें नेटवर्किंग, रेस्ट एपीआईज़ आपको इम्प्लीमेंट करने मिलेगा। ये कर लोगे ना, हाँ, देन यू कैन से कि हाँ, मैं अपने स्ट्रीम में एक्सपर्ट हो गया हूँ। सो ये थे कुछ थोड़े से बोरिंग पॉइंट्स, थोड़ा-सा अच्छे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये एक स्पॉइलर अलर्ट बोल सकते हैं और एक इवेंट का अनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं कि गूगल की तरफ से एंड्रॉइड स्टडी जैम का एक इवेंट रिलीज़ हो रहा है। तो इस इवेंट में जॉइन करने के लिए ये आपको पूरा का पूरा एंड्रॉइड डेवलपर बना देगा कोटलिन की मदद से। इस इवेंट को जॉइन करने के लिए आपको किसी न किसी डीएससी क्लब से जुड़ना पड़ेगा और वो यही क्लब है एआईएसएसएमएस सीओई। तो जुड़े रहिए, चैट बॉक्स में लिंक दी जाएगी हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन चैनल का। नोटिफिकेशन चैनल जॉइन कीजिए, आपको इसका नोटिस मिलता रहेगा, ग्रुप्स के लिंक्स आते रहेंगे। सो प्लीज़ डू दिस। ओके। बज गए हैं, जल्दी से जल्दी कवर करते हैं, तो आपको रुकाएगा नहीं क्विज़ की तरफ जाते हुए। 2 छोटे पॉइंट्स, कस्टम रोम मैंने ऊपर बताया था। सो व्हाट एक्चुअली कस्टम रोम इज़, the Android versions provided by Android is stock ROM. Okay, so those are stock Androids, vanilla Android. So now, if you have good programming experience, you know how to make changes, then you can take a version of stock ROM and customize it according to your needs by deleting, editing certain functions and design. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक स्टॉक ROM का कोई भी वर्जन उठाइए, एंड है ये 10 उठाइए आपके हिसाब से, और अगर आपको आता है चेंजेस करने, जो कि आप ऑब्वियसली सीख जाएंगे ऊपर के रिसोर्सेज से पढ़ के, अगर नहीं भी हुआ तो अभी मैंने एक इवेंट बता दिया, वो आपको इवेंट सब कुछ सिखा देगा। तो उससे क्या करना है आपको, वो जो कस्टम जो वर्जन है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप फंक्शंस डिलीट करो, आप लोगो ही चेंज करो, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और फिर आप अपने उसको डिवाइस पे रन करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका क्या रहा। अब जैसा आप पिक्सेल रोम रन कर सकते हैं एमआई डिवाइस पे, और आप आईओएस इंटरफेस रन कर सकते हैं एंड्रॉइड पे। तो हुआ कि नहीं है आपकी बात? तो ये सब कुछ होता है कस्टम रोम्स की। इसकी भी लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख जाएगी। आगे आपको अगर कुछ डिटेल्स में पढ़ना हो तो ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
Moving ahead, coming to the last point, end of the topics, एक short explanation दूंगा कि how you can earn money. अब आप अगर ऐसा सोचेंगे कि एंड्रॉइड से मैं कैसा अगर पैसे कैसे कमा सकता हूँ, तो उसके लिए एक बहुत बहुत अच्छे तरीके मैं बताऊंगा. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, गूगल एडमॉब्स. अब गूगल एडमॉब्स क्या है? यू कैन डिस्प्ले एड्स इन योर एप्स एंड अर्न मनी फ्रॉम इट. It sounds complicated. Yes, it is. All you have to do is to create an AdMobs account, activate one or more unit IDs. ये unit IDs आपके लिए unique होती है. And put up app advertisements, in app advertisements, and done. Your app is ready to earn. बस आपके ऐप को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाइए, पैसे कमाइए. हाँ, थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल के, रीड कर लीजिएगा. Another ways of earning is you can freelance apps on Fiverr or freelancer. Means आप all you have to do is put up gigs डालना है, इस साइट्स पर जाके लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है, gigs डालना है, and people contact you, they give you some work and they pay you for the work you have done. एक अच्छा कॉन्सेप्ट ऊपर आ रहा है एपीआईज का. ठीक है, तो एपीआईज क्या होते हैं? एपीआईज और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज a method where you can write up small bits of functional code and earn through them while you lease the code to other people for use. क्या मतलब हुआ इसका? कि आप पूरा का पूरा ऐप नहीं बना रहे, आप छोटा सा एक टुकड़ा बना रहे हो उस ऐप का और दूसरों को यूज करने दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं. है कि नहीं कमाल की बात? पूरा ऐप भी बनाने की जरूरत नहीं, छोटा सा फंक्शन लिख दो, डिस्प्ले कर दो कि हाँ ये फंक्शन ये काम करता है, किसी को अगर उसकी जरूरत रहेगी वो लोग यूज कर लेंगे. तो ये था एक एपीआई का जरिया. ये एक्चुअल में प्रैक्टिस होता है. उबर एंड गूगल मैप्स का यही है कि उबर अपने ऐप में जो गूगल मैप्स का दिखाता है उसके वास्ते गूगल को पे करता है. तो इसको बोलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन एंड हाउ दे अर्न फ्रॉम एपीआई इंटीग्रेशन. और सोशल मीडिया पे आप अपने स्किल्स एडवर्टाइज कर सकते हैं, मनी गेन कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, इश्यूज फिक्स करके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल बी हैविंग अ बिग नॉलेज बेस ऑफ अ बिग टेक्नोलॉजी which you can showcase and gain jobs and internships. So please go for it. Without wasting any more time, I would like to hand over the session to Harsh, who is going to conduct the second part of the quiz and hand over the prizes. Over to you, Harsh. Thanks a lot, Aman, for such an informative session. We definitely learned something new. So, friends, let's continue to the last part of the quiz, which we started at the beginning. I request everyone to log back to the screen. We'll wait for a couple of minutes and then we'll continue the quiz. Up till now, on the leaderboard, we have Imposter at rank 1. At rank 2, we have Yash. At rank 3, we have Glock 18. At rank 4, we have Webhub D. And at rank 5, we have Hello. There's not much of a difference. I guess all of them have answered the questions correctly. It was just a matter of time. Okay, so let's start with the next round. Question number 5. Which of the following language is used for hybrid development? This was done in the PPT and explained by Aman. I hope you all remember.
Okay. So we have Vaibhav D coming in the leaderboard and Aishwarya coming in the leaderboard. Imposter keeps his rank 1. Question number 6. In which of the following you cannot earn from Android development? Okay, so here we see this was a trick question, as AISSMS are for web development and AISSMS are for the Android development. So many of you knew this. That's great. We still have imposter at rank 1. Which of the following is a custom ROM? Okay, so many of you have answered it incorrect. I see. I guess this was discussed in the session. Anyways, moving on to the 8th question. We have Gaurav in the leaderboard now and Swapnil at rank 2. Imposter keeps his position 1. Android application extension is okay. So many of you have answered it correctly. I guess only a few of you have answered it incorrect. So still we see imposter at rank 1 and the leaderboard does not change. Moving on to the 9th question. How can you run an Android application in debug or testing mode? Okay, so many of you have answered it correctly. Moving on to the last question. This question is not graded. If you select any of the answer, you will get full marks. It's just a matter of time that who selects it first. And be honest with this question. So did you enjoy the session? Okay, so I see many of you have enjoyed the session and only a few did not like that much. Yeah, I like that. So let's see the final result and the final scoreboard. Who wins what? So the podium here at 3rd rank, we have Gaurav Dalvi. At rank 2, we have Swapnil. And at rank 1, we have Imposter.
So there is one imposter among us, and the thing is, we'll come to know the imposter tomorrow morning when he'll get a shout out from us in on the official Instagram handle page. I thank everyone for actively participating in the quiz and trying their best. I congratulate all the winners and request them to share the screenshot to claim their prizes. Now, as promised, I will share you a paid Udemy course for actively participating in the quiz. Please check the link in the chat. This is the Udemy premium course, which in the Black Friday sale is for 360 rupees. But as you have joined the session and stayed till the end, you will get this for free. The link will be posted in the chat. So thank you very much. I'd like Tejas to continue and propose the vote of thanks. Okay, am I audible? Yes, Tejas. Hmm. So it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion on behalf of Android team, DSC, and on my own behalf, I extend a very hearty vote of thanks to each one of you for patiently listening till the end and being such a great audience by making this program a great success. Thank you very much. You all can leave now. Just an announcement. The winners will have to DM us on our official Instagram page to claim their reward. Thank you very much.